Hello and welcome to the Tech Mindset. आज हम बात करने वाले हैं about this whole noise about putting AI on pause and let's quickly see के अभी तक के progress क्या रही है on the AI front. Towards the end of last year, GPT 3.5 आया था and within 34 days they released GPT-4, which is a much better version of GPT 3.5. People thought that it will take a few years before GPT-4 will be released, but it only took 34 days. And people are scared. Okay, speed at which AI is developing, this will cause major issues. We have seen Elon Musk talking about this. Also in the Future Life Institute magazine, there was, or the website, there was this article about it. So, क्या लग रहा है गौतम? हो क्या रहा है ये? If you've been watching our videos, you must remember that we spoke about Life 3.0. There's this book, and in fact, उस book के basis पे वो Future of Life Institute एक बनाया था, which is like a collegiate of all AI and AI in physics वाले professors etc. together to come together, and they have written this open letter, like you mentioned, Nimesh, to pause the AI experiments for 6 months, basically. So I'm not sure whether this is a good idea, whether this should be paused, and whether even this is a feasible idea. ये वही बात है कि क्या ये हो पाएगा, even if it is paused, basically. उनका ये कहना है कि ये इतनी स्पीड से बढ़ रहा है, अनरेगुलेटेड, अनचेक्ड बढ़ रहा है, तो इसके ऊपर पहले सोचा जाए, फिर कुछ काम किया जाए, जो बड़ी सी अजीब सी बात लग रही है बेसिकली. तुझे क्या लगता है? मुझे लगता है कि जिस टाइप का मोरेटोरियम ये लोग अप्लाई करना चाह रहे हैं, आई थिंक इट वुड वर्क जहाँ पे लेट्स से वेस्टर्न हेजेमनी है, अगेन काइंड ऑफ स्लाइटली ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स द जियोपॉलिटिक्स ऑफ द वर्ल्ड. मगर हिस्टोरिकली देखो तो नन ऑफ दीज मोरेटोरियम्स एक्चुअली वर्क वेरी सक्सेसफुली. भले केमिकल वेपन्स ले लो, NPT probably to some extent, but what are you going to do about these things? Yeah, in fact, Future Life Institute जो है वो Life 3.0 में उसने ये बात कही है कि जैसे 1920s में जब साइंस प्रगति कर रहा था in terms of chemistry, so then they came together and decided कि we will not use this for the purpose of weapons. But okay, देर सवेर वो फिर भी उसके chemical weapons तो बने. बेसिकली ठीक है, आजकल इतने मास यूज में नहीं है, बट हैं वो वेपन्स हैं, तैयार हैं. सो आई डोंट नो व्हाई दे आर रेजिंग दिस बेसिकली, बट बिकॉज दिस पॉडकास्ट इज अबाउट द टेक माइंडसेट, राइट? कि व्हाट शुड वी डू. ये तो बड़े बड़े लोग, इलॉन मस्क और जो भी है, दे आर ट्राइंग टू pause this AI or at least influence the development of AI. But from our perspective, what do we think? That's what we will talk about. Of course, but before we do that, just out of my curiosity, तुझे क्यों लगता है कि ये लोग पॉज करवा रहे हैं? What is your conspiracy theory about this? Well, I'm not a conspiracy theorist, basically, but my guess is from those capitalistic perspective कि भाई मैं भी थोड़ा डेवलपमेंट कर लूँ, जब तक मैं भी आगे थोड़ा बढ़ जाऊँ. Maybe that's one of the reasons, at least. Maybe in Elon Musk's case, like he already recently launched some truth AI करके basically just to उसका डेवलपमेंट स्टार्ट कर दिया है. तो although he's asking for a pause, but खुद ही डेवलपमेंट कर रहे हैं. तो but I'm not going to go into the controversies and hypocrisy वाली जो thinking है about some of these areas. We can always go back in past and see the development of previous technologies की क्या हुआ basically. और ये बार बार डरा रहे हैं कि फ्यूचर बर्बाद होने वाला है, राइट? और इसके लिए राइट, और हम लिंक में शेयर करेंगे कि actually future is going to be abundant. There is going to be more abundance. In fact, one of the universities which talks about singularity, and maybe we can talk about singularity
some other day. But I guess now that you have mentioned this, थोड़ा सा context about this abundance theory and the vision of future, कैसा, what does this hypothesis talk about? Basically what it talks about is कि हमने अपने दिमागों को ना पोल्यूट कर लिया है नेगेटिव न्यूज़ सुन के, बेसिकली कि सब कुछ नेगेटिव हो रहा है, सब नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है. जैसे हमारे माँ बाप कहते हैं नहीं देश खत्म हो जाएगा, ये दिन बर्बाद हो जाएगा, वैसा टाइप. बट ये कह रहा है कि एक्चुअली नहीं, इफ यू सी more and more development ही हुआ है, more and more people have got benefit out of technology or other developments as well in the world, and we are actually moving more towards abundance basically. और ये abundance actually नहीं होता of let's say materials, things, services, etc. Then there wouldn't have been this level of development of human capital. बेसिकली कि जो हमारी एक्चुअली तरक्की हुई है, सोसाइटीज़ की तरक्की, कम डिजीज़ है अब, और बेसिकली अभाव नहीं है चीज़ों का, खाने पीने की जैसे इतनी कमी नहीं है. और तो हाँ, नेगेटिव न्यूज़ आता रहता है कि अभी भी गरीबी, भुखमरी, ये सब है, एंड ऑफ कोर्स है, यू कैन नॉट से नहीं है, बट रिलेटिवली स्पीकिंग वो कम हुआ है और वो कम होता जाएगा, उनका मीनिंग ये है. And in the context of AI also exactly the same thing applies. There is so much abundance of data, knowledge, etc. on which this AI technology can tap into. There is so much abundance of, let's say, processing power which is available, जो server computes available है, to be able to develop these technologies. And that is the context in which abundance should be thought about. कि ये abundance है, हाँ, इसका क्या करना है, ये तो वही है कि अगर कल को वो अगर तुम राजा बन जाओगे तो क्या करोगे. ये वाले सवाल का जवाब देना है. और हर इंसान राजा बन जाएगा, क्योंकि उस थियरी के हिसाब से ये भी है कि DIY होने वाला है बहुत ज़्यादा, कि लोग DIY अपनी ज़िंदगी खुद से बना सकते हैं, तो अपना AI खुद से बना सकते हैं. आज की डेट में आप कहीं पे भी जाइए, क्रेडिट कार्ड स्वाइप कीजिए, थोड़ा से ज़्यादा भी नहीं लगता है, and you can develop your own data models, etc. A lot of these things are free, so it's abundance in that context also applies basically. Yeah, absolutely. So coming back to the crux of our chat today, the tech mindset about ये pause होगा नहीं होगा, regulation आएगा नहीं आएगा, what is our takeaway? What is our mindset? So obviously very simple, in whichever region, because आजकल हर country region में अलग अलग laws चल रहे हैं, अलग अलग regulation चल रहे हैं इसके ऊपर, and maybe that is going to develop not just in AI but in social media, other technologies as well. So first of all, it's very important as a tech person to understand the regulatory environment around you. That is like pretty important basically. Technology bits are important, but first understand what regulatory bits apply to you before even using this technology. Then if you're working for an organization, understand what policies apply in your organization to use, because all of these technologies are very very data hungry. कि ठीक है, API तो मिल रहा है ओपन AI का, बट उसको जब यूज़ करेंगे उससे कौन से डेटा को एक्सेस करने वाले हो वो जानना बहुत ज़रूरी है, दैट यू आर नॉट ब्रेकिंग एनी ऑफ द organization policies, regulation of the law of the land, etc. So understand that before you start applying any In fact, I would say ज़्यादातर जगह पे अभी कोई law नहीं है about AI. Understand, this is a fantastic opportunity. जो करना है, जो try करना है, you can learn it to your heart. And when the regulation comes in, like you said, understand it and kind of tune your usage or your ambitions around that legislation. Yeah. Then the other thing is, again, हम लोग तो बातें कर रहे हैं कि कुछ लोग दूसरे साइड टाइप के मोड में भी कि इसको इग्नोर करते हैं, क्या हो रहा है छोड़ दो, हमारी तो जिंदगी यही है, कल को बैठ के तो गले पे ना यही दिखना है. तो I would say नहीं, rather than that at least learn it, even if you're not able to directly apply it in your day-to-day job कि मैं कल को कुछ Oracle को कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ या माइक्रो सर्विसेज लिख रहा हूँ या समथिंग लाइक दैट, बट डोंट इग्नोर इट.
basically at least learn about it. जो पिछली बार भी कहा था, be curious, so remain curious. Basically, will be the other thing that as our tech mindset view on this. Yeah, basically adopt it in your life. Whatever you're doing, you will still find a use case to try your hands on AI. Try karo, become an expert in this, because you don't know where life will take you with this adoption. I remember a good example, Twitter का, right? जिसको अंकल लोग सब ट्विटर बोलते थे. तो ट्विटर जिन लोगों ने सही टाइम पे अडॉप्ट किया, people who kind of earlier thought यार ये 2 लाइन लिख के क्या करेंगे, but they kind of mastered it and it benefited them not only as an influencer but even for digital marketing purposes, making the right contacts, and it was fantastic. But people who did not adopt on time kind of lost on this opportunity. So early mover advantage, don't miss out on that. Absolutely, yeah. बहुत सारे छोटे छोटे यूज केसेस में मैं यूज कर अपने रिसर्च में, जैसे मैं और मेरे जो बाकी के कलीग्स हैं वो अलग रेफरेंस सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, तो हमेशा कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है जब हम लोग एडिट करते हैं अपने पेपर्स. तो इनफैक्ट चैट जीपीटी इज़ यूजफुल टू सॉर्ट आउट दोज रेफरेंसेस बेसिकली, नहीं तो मैनुअली करना पड़ता था वो. तो इनफैक्ट आई एम गोइंग टू ट्राई दैट आफ्टर दिस पॉडकास्ट, वन ऑफ द एक्टिविटीज दैट आई हैव फॉर टुडे माई सेल्फ. जो इट्स जस्ट अ बेसिक यूज केस, बट ट्राई करो कि क्या निकलता है, नहीं तो वापस मैनुअली या किसी और तरीके से तो कर ही सकते. बिल्कुल बिल्कुल. ऑलराइट, आज का सेशन यही कंक्लूड करते हैं. स्टे ट्यून्ड एंड विल बी बैक विद मोर नेक्स्ट टाइम. थैंक यू. Brilliant. Thank you.